Hello people, I am Dr. Muskan. I am MBBS intern and I am here in front of you to share some facts about pancreatitis which I have acknowledged in the rounds in the morning with sir. I am a medicine intern right now. So there is difference between theory and practical, of course. So I am here to tell you some practical points which I have seen, I have enjoyed in the rounds today. The first fact is जब सीरम amylase और lipase का level is 3 times, 3-fold, तब हम बोलते हैं pancreatitis है. And your lipase level is less than 82 micro per liter and amylase level is less than 115 micro per liter. These are the normal values. इसका 3 times होगा तब हम बोलेंगे pancreatitis, otherwise नहीं. सेकेंड फैक्ट इज़ द कॉज, कि फैक्ट भी नहीं है ना, द कॉज क्या है, क्यों हुई बीमारी. इट इज़ लिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ सम कॉमन कॉजेज, मेटाबॉलिक कॉजेज, इन्फेक्टिव कॉजेज, अदर कॉजेज, सम ड्रग्स. सो कॉमन कॉजेज क्या क्या है? योर अल्कोहल, गॉल स्टोन्स, इडियोपैथिक. योर ड्रग्स कौन कौन सी है? एजिथ्रोप्रीन, सोडियम वाल्प्रोएट, योर थायाजाइड ड्रग्स एंड सोडियम valproate and pentamide. Metabolic causes are hypertriglyceridemia and hypercalcemia. Your infections such as mumps, coccyx. Other causes are trauma, post ERCP, scorpion bite and post surgical organ transplantation. ये सब causes होते हैं for pancreatitis. ठीक है. Now what is the clinical features of the patient which you will appreciate? You will see in the eyes are yellow in color, that means jaundice है. You will see that there will be high heart rate, tachycardia होगा. ठीक है. Then you will see GI symptoms such as epigastric pain which will be radiating to back. You will see diarrhea. Okay. Then you will see fever. Okay. And उसके बाद टेंडरनेस होगी, डिस्टेंशन होगी, कुछ साइंस होंगे. यू कैन सी ब्लूइश डिस्कलरेशन, ग्रे टर्नर साइन, कलन साइन, फॉक्स साइन, ये सब मिलेंगे. ठीक है. नाउ व्हाट नेक्स्ट? अगर कई बार क्या होता है, देयर इज़ 2 things in pancreatitis, that is early phase and that is the late phase. Early phase is the first week and late phase is post first week, मतलब फर्स्ट वीक के बाद, मोर देन 1 week. तो सिविरिटी कैसे देखते हैं? दैट इज़ माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर. माइल्ड इज़ नो ऑर्गन फेलियर, मॉडरेट इज़ लेस देन 24 आवर्स, लेस देन 48 आवर्स, लेस देन 2 days है और ऑर्गन फेलियर है. एंड सिवियर इज़ मोर देन 2 days आर देयर एंड तब वी कैन सी दैट देयर इज़ ऑर्गन फेलियर. 2 types of complications is there. That one is edematous and other is necrotizing. Edematous में you will see less than 4 weeks and more than 4 weeks. If it is less than 4 weeks, you will see there is acute pancreatitis collection. If it is more than 4 weeks, you will see pseudocyst. Now necrotizing में what you will see, if it is less than 4 weeks, you will see acute necrotic collection, and if it is more than 4 weeks, you will see wall of necrosis. Now there is one score that is known as BISAP score, BISAP. B means your blood urine nitrogen should be less than 25. I means impaired mental status. S means your SIRs, मतलब inflammatory. Then A means your ascites. Sorry, A means the age, more than less than 60, and P means your pleural effusion. Now the score, if it is more than 2 total 5 points, and then mortality is 0.05%. अगर score is equal to 2 then mortality is 2%, and अगर score is more than 3 then mortality is 5 to 20%. There are some other scores also such as Balthazar score which we use in CT scan, Renson's score. ठीक है. एटलांटा तो भी मैंने बता दिया. Pancreatitis is very interesting topic, and now the best part is your complications to pancreatitis में आप देखते हो, because all this thing shifts to from ward to your ICU thing when complicated part comes. We will discuss the complicated part, but beforehand I want to ask you, अगर pancreatitis के patient को diabetes भी हो, which all drugs you will not give? One is DPP4 inhibitors and other is your incretin, the drugs which mimics like incretins. Some drugs are the names of the drugs. So now we are coming to the complications of acute pancreatitis. So complications क्या है? First is hypoalbuminemia. Hypoalbuminemia का मतलब क्या है? There is increase in the capillary permeability. Second is your hypocalcemia. Hypocalcemia क्यों हो जाता है? क्योंकि जो नेक्रोसिस होता है उसमें कैल्शियम का सिक्रेशन हो जाता है. थर्ड इज़ योर हाइपोक्सिया. ABG में आपको दिख जाएगा.
हाइपोक्सिया होगा, एंड वो क्या हमें कॉम्प्लिकेशन सजेस्ट करेगा? देयर कैन बी RDS. क्यों RDS होगा? क्योंकि जो तुम्हारे एल्वेलाई होंगे या फिर पल्मनरी वेसल्स होंगे, देयर विल बी माइक्रोथ्रोम्बाई. एल्वेलाई में तो नहीं, लेकिन पल्मनरी वेसल्स में देयर विल बी माइक्रोथ्रोम्बाई. फोर्थ विल बी योर हाइपरग्लाइसीमिया. क्यों होगा? इट विल बी ड्यू टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक आइलेट्स. फिफ्थ विल बी योर शॉक, एंड सिक्स्थ विल बी योर रीनल फेलियर. क्यों होगा रीनल फेलियर? क्योंकि पैनक्रियाटिक बेड में ये जो फ्लूइड होगा वो लीक हो जाएगा, जो फर्दर कहाँ पे चला जाएगा? लूप और बाउल में चला जाएगा, विच विल लीड टू AKI, एंड फर्दर विच विल लीड टू द एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस. दैट्स वाई देयर कैन बी रीनल फेलियर. नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन विल बी एब्सेस. एब्सेस क्यों होगा? क्योंकि फीवर है पेशेंट को, ल्यूकोसाइटोसिस है, टेंडरनेस है, एपिगैस्ट्रिक मास है, लेफ्ट प्यूर रिफ्यूजन है, एंड लास्ट फीलिंग है ड्यू टू द लीवर वेन, ड्यू टू द स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस, इसलिए एब्सेस बन जाएगा वहाँ पे. नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज योर सूडोसिस. सूडोसिस क्यों होगा? देयर विल बी फ्लूइड कलेक्शन. एंड क्यों फ्लूइड कलेक्शन होगा? फ्लूइड में देयर विल बी इंक्रीज इन द एंजाइम कंटेंट. अगर लेस देन 6 सेंटीमीटर तो वो डिजॉल्व हो जाएगा स्पॉन्टेनियसली, अदरवाइज यू हैव टू डू द सर्जरी. नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज योर एसाइटिस. एसाइटिस क्यों हो जाता है? क्योंकि सीरम एमाइलेज का लेवल बढ़ जाता है, एंड देयर विल बी रप्चर ऑफ द पैनक्रियाटिक डक्ट. देयर विल बी ड्रेनेज ऑफ सूडोसिस्ट इनटू द पैनक्रियाटिक कैविटी. एसाइटिस हो जाएगा. GI कॉम्प्लिकेशंस होगी कुछ, जैसे अपर GI ब्लीड होगा, जो क्या कॉज करेगा? गैस्ट्रिक इरोजन. ड्यूडनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जो क्या कॉज करेगा? कंप्रेशन ऑफ द पैनक्रियाटिक मास. ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा, विच विल cause the compression of the common bile duct. Now the most interesting part, your investigations. WBC का लेवल आपको क्या मिलेगा? बढ़ा हुआ मिलेगा. ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा. ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ा मिलेगा. सीरम कैल्शियम का लेवल लो मिलता है इन 25% ऑफ केसेस. AST बिलिरुबिन अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा. सीरम एल्ब्यूमिन का लेवल लो मिलेगा. आई टोल्ड यू हाइपोएल्बुमिया कैन बी कॉम्प्लिकेशन. LDH का लेवल भी मोर देन 500 माइक्रो पर DL, विच विल सजेस्ट पुअर प्रोग्नोसिस. ABG में यू विल सी हाइपोक्सिया. ठीक है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन से यू कैन पता लगाएंगे दैट यू द पेशेंट हैज़ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस. ओके. X-ray abdomen will be there, which you can say see your gallstones, colon cut off sign. You can see left pleural effusion. Sorry, X-ray में gallstones might be. ठीक है. CT scan में you can see your pseudocyst, abscess, large pancreas. Ultrasound में you can see gallstones, biliary obstruction. Now what will be the management of the patient? Of course, bed rest, NPO रखा है, नील परोलर, तो फ्लूइड्स चलेंगे. IV फ्लूइड से लाइन लो या फिर होल ब्लड लो. नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग करो अगर पेशेंट को नोजिया आ रहा है, वॉमिटिंग आ रहा है, या फिर देयर इज डेवलपमेंट ऑफ पैरालिटिक इलियस. पैथिडीन दो पेन को कंट्रोल करने के लिए फॉर 3 to 4 hours. अवॉइड मॉर्फिन. ऑक्सीजन दो हाइपोक्सिया को कंट्रोल करने के लिए, और अगर ARDS तक पहुंच गई है बात तो वेंटिलेटर लगा दो. डोपामीन दो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, एंड इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू फ्लूइड्स तब आप डोपामीन दो. कैल्शियम ग्लूकानेट दो IV तभी दो अगर आपके पास हाइपोकैल्सीमिया इज एसोसिएटेड विद टेटेनी. नाउ आप फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हो पेशेंट को अगर कोगुलोपैथी आपको दिख रही है. सीरम एल्ब्यूमिन दो अगर हाइपोएल्बुमिया है. इंसुलिन दो अगर हाइपरग्लाइसीमिया है. Antibiotics though to prevent infections. ERCP is done in when severe pancreatitis is there, which results from stones in the biliary duct. And जब pancreatitis resolve हो जाए, you can remove the gallbladder doing the cholecystectomy. So this all the knowledge I gathered in the morning, and it was very very interesting. So I thought I share with you too. Bye bye. Dr. Muskan Manthal is signing off now.